Hello everyone, this is Pranjali from Profound EduTech. Okay, so first in this session, you will understand the introduction part for HTML. Okay, so before going to start this session, I will suggest you one thing. If you have any doubt, just put it in chat box. I will check chat box and definitely I will give answer of your particular problem. Okay. सो अगर आपने एक साथ मल्टीपल स्टूडेंट्स ने अनम्यूट करके अगर आप आपका डाउट पूछोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा. So that's why I am suggesting you please use chat box. Okay. So I hope chat box is accessible to everyone. Please give confirmation. Yes. Okay. Kunal, Rohan is saying yes. What about other students? Chat box accessible है सबको? Okay. So now today we'll see interesting part for HTML. Okay. So HTML means what? Hypertext Markup Language. So we'll see why we need this HTML. हम HTML through क्या क्या applications या फिर कौन सा data design कर सकते हैं? Basically, this HTML is used for designing the web pages. Okay. So just a moment, I'm sharing my screen. We'll discuss first introduction part for HTML. After that, I will show you some elements. We'll see some demos. So you will get more clarity about this entire HTML. Okay. So just a moment, I'm sharing my screen. So just give me confirmation. Is my screen is visible to everyone? Yes. Okay. Nisha is saying yes. Kunal, Rohan ने भी reply दिया है yes. Okay. So now we'll see introduction part of HTML. But before going to learn this HTML, we'll see exactly HTML होता क्या है. HTML के साथ आप कौन से टाइप के वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हो एंड क्या क्या डेटा हम डिफाइन कर सकते हैं. ओके. सो जब भी आप एक वेबसाइट विजिट करते हैं, यस, तो आपके सामने वेब पेजेस डिस्प्ले होते हैं. यस ऑल ऑफ यू. तो वेब पेज पे क्या डेटा रिप्रेजेंट होता है? दैट इज some theory part होता है, some audio files होते हैं, some video files होते हैं, different images, different links display होते हैं. Yes, जैसे ही लिंक पे क्लिक करते हो तो क्या होता है? दूसरे वेब पेज पे आप नेविगेट होते हो. तो ये क्या है? वेब पेजेस का यहाँ पे लिंकिंग किया है. ओके. So these type of web pages, अगर आपको डिजाइन करने हैं, then we can use first HTML. Okay. So web pages as well as web applications के लिए जब आप आपका advanced Java means in Servlet and JSP, when we design web applications, at that time we need HTML and CSS also. So to design your web pages, we need this HTML. Now, HTML ये कोई programming language नहीं है. It is an interpreted language. Okay? So जैसे programming languages में आप coding करते हो, वो coding यहाँ पे नहीं करना है. Just you have to use particular elements, that is tags as well as attributes to design your web pages. I will give you one real life example. Each and every student हम Gmail use करते हैं. Yes, all of you करते हो ना आप Gmail use? So very first time जब भी आपने आपका अकाउंट ओपन किया है, at that time registration आपने किया होगा. So first आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे सारे डिटेल्स होते हैं. फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर,
देन आपका यूजर आईडी क्या चाहिए, आपको पासवर्ड क्या देना है, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे आप डिफाइन करते हो। तो ये फॉर्म भी डिजाइन ही किया है। सो सेम विद द हेल्प ऑफ HTML you can design forms also. Means whatever data you want to display on your web page, that thing we can design with the help of HTML. Okay, अगेन वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने रजिस्टर बटन पे क्लिक किया होगा। When we click on that register button, जो भी डिटेल्स आपने वहां पे फिलअप किए हैं वो सारे डिटेल्स स्टोर्ड होते हैं सर्वर में। ओके, सर्वर पे डेटाबेस। डेटाबेस मीन्स व्हाट? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड और लॉजिकल डेटा। सो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स का सारा डेटा वहां पे रहेगा। जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉट एवर यूजर आईडी एंड पासवर्ड यू हैव एंटर्ड, विद द हेल्प ऑफ दैट यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको लॉग इन करना पड़ता है। सो सेकेंड टाइम जब आप जीमेल विजिट करते हो, अगेन आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है क्या? नो, आपको जस्ट लॉग इन करना है। ओके, सो लॉगिन का पेज डिस्प्ले होता है। अगेन दैट इज व्हाट? दैट इज फ्रंट एंड मींस वेब पेज। तो वहां पे क्या क्या डिटेल्स होते हैं? यूजर आईडी, देन वन टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड, देन वन टेक्स्ट फील्ड एंड बटन टू लॉग इन। yes, so when we enter these credentials and when we click on that button, आपका डेटा डेटाबेस सर्वर पे चेक होता है, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक होता है। इफ दीज टू वैल्यूज आर मैच, कौन से वैल्यूज? एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो वैल्यूज आपने प्रोवाइड किए हैं एंड एट द टाइम ऑफ लॉगिन जो वैल्यूज आप प्रोवाइड कर रहे हो वो दोनों वैल्यूज डेटाबेस में मैच होते हैं। If these two values are correct, then next home page पे आप move होते हो। Yes, तो ये just designing part के लिए first we need this HTML. Okay, so let's start with HTML introduction part for HTML. So see HTML. HTML stands for hypertext markup language. Okay, HTML stands for hypertext markup language. So it is a combination of hypertext and markup language. So these are the two different entities, hypertext and markup language. So what do you mean by hypertext? Hypertext, that is nothing but linking between the web pages. Okay, for example, different websites आप विजिट करते हो, नंबर ऑफ वेब पेजेस वहां पे डिस्प्ले होते हैं, तो नीचे सम लिंक्स होते हैं, दैट इज नेक्स्ट एंड प्रीवियस। So when we click on that next link, next वाला पेज ओपन होता है, and when I click on previous link, previous वाला पेज ओपन होता है। तो ये क्या हो रहा है? लिंक हो रहा है आपके वेब पेजेस। So hypertext, it is used for linking the web. Markup language describes the structure of web page. Okay, this is most important point about this HTML. So जब भी आप ये HTML यूज करोगे, ये जस्ट डिस्क्राइब करता है structure of your HTML, structure of your web page. Okay, बट डिजाइनिंग पार्ट के लिए हमें डिफरेंट यूज करना है, दैट इज वी विल यूज CSS. So before CSS, first we'll see introduction part for HTML and then you will understand CSS. CSS के लिए हमें HTML की जरूरत है। With the help of HTML, easily
you can HTML में आप सिर्फ आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो. ओके, so clear. HTML, it stands for hypertext markup language. It is a combination of hypertext and markup language. Hypertext means linking between the web pages, and markup language describes the structure of your web page. Here this introduction part. So to design websites, to design web pages, to design web applications, we need HTML. So yes, all of you clear this part. कि क्यों हमें लर्न करना है HTML? Please use chat box. Yes, Ankita is saying yes, Nisha is saying yes. Okay, okay. Now, HTML, as I told you, it stands for Hypertext Markup Language. Okay. So with the help of HTML, we can design web pages. Then ये HTML जो है ये किसने डेवलप किया है एंड व्हाई ये यूज करना है? सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि हमें क्यों यूज करना है. फॉर डिजाइनिंग पर्पस we can use HTML. With the help of HTML we can design our web pages. Okay, now this HTML is developed by Tim Berners-Lee. टीम बर्नर्स-ली ने ये HTML इंट्रोड्यूस किया है. There are different versions of HTML, but right now we are using HTML5. Okay, so different versions है, but right now here we are using fifth version, that is HTML5. Now, when we send the request, means आप गूगल पे एक रिक्वेस्ट सेंड करते हो. ओके, तो डिफरेंट वेब पेजेस डिस्प्ले होते हैं. तो ये क्या होता है? सो देयर इज अ आर्किटेक्चर, दैट इज क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर. Instead of client and server, we can use different terms also. Okay, that is sender and receiver. Sender, that is nothing but client, and receiver, that is nothing but server. So when client send the request towards the server, then server will retrieve the data from the database and again it will give the response. Okay, so I will show you one diagram, that is how the web works. So can you see exactly same thing is given, client and then server. So with the help of protocol which means what? Set of rules. Okay, then when client send the request towards the server, server will fetch the data from the database and again it will give the response to the client. So here www use classical client and server architecture. And for this request and response, one protocol is used and name of that protocol is HTTP protocol. Okay, so in this way आपका web work होता है. Okay, so first you have to design web pages, then client will send the request towards the server. Server will identify the data and it will give you response. Best example we have already discussed, that is login page. So first login page display होगा client side पे. Yes, when we enter the login credentials, username and password, and when we click on login button, it will send the request towards the server. Then server will check that data into the database कि ये values correct है या नहीं. If these values are correct, then आपका successful login होता है. Otherwise, it gives login failed message. Okay, so that response again sent back to the client. So in this way, आपका web work होता है. Web means what? That is nothing but net. Okay. So now, with the help of HTML, you can design web pages.
So already we know that HTML stands for Hypertext Markup Language. Then hypertext means linking between the web pages, and markup language, it describes the structure of your web page. Okay. Now, what is web page? Here I am using web page. But what exactly it is? So see, web pages are text files which contain HTML. So HTML में रहेगा collection of notation for describing the web page. अगर आपने एक वेब पेज विजिट किया है तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन आता है विच इज रिलेटेड टू योर एलिमेंट, विच इज रिलेटेड टू योर एंटिटी. यस, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, दैट इज नथिंग बट मेटा डेटा, or you can say data about a data. Okay, so the markup tag provide the information about the page content structure. Now, how to create HTML5 pages? Very first thing, first you have to save your HTML file with the help of either HTML or HTML extension. तो either HTML और .html एक्सटेंशन से आपको आपका फाइल सेव करना है. नाउ ये HTML फाइल क्रिएट करने के लिए देयर आर सम एडिटर्स. ओके, टेक्स्ट एडिटर्स आर देयर as well as some HTML editors are also there. Text editor with the help of Notepad and Notepad++, you can design HTML files. As well as there are different HTML editors are available in market. Some of them are Microsoft Front Page, Macromedia Dreamweaver, Netscape Composer, Visual Studio, Sublime Text. Okay, these are the different HTML editors. बट आप बोलोगे नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस भी है, तो क्यों ये एडिटर्स की जरूरत है? सी, अगर आपने HTML एडिटर्स यूज नहीं किए हैं, अगर आपने नोटपैड एंड नोटपैड प्लस प्लस यूज किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटपुट सेम ही आएगा. बट वन ड्रॉबैक इज दैट व्हेन वी यूज नोटपैड एंड नोटपैड प्लस प्लस, यहाँ पे आपको सजेशंस नहीं मिलेंगे टू कंस्ट्रक्ट योर वेब पेज, टू डिजाइन योर वेब पेज. मीन्स ईच एंड एवरीथिंग आपको ही टाइप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा. यस, देन आपका डेवलपमेंट जो है वो क्या होगा, स्लो होगा. सो दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट यू कैन यूज HTML editors, because with the help of HTML editors easily you can design your web pages, and easily means very fastly you can develop your application. Here, now first I will show you the structure of HTML page. कि क्या होता है HTML, exactly उसका structure क्या. Okay, so first you have to save your file with .html extension. Here I have saved my file with first.html extension. Now, as I told you, when we use HTML, यहाँ पे two different things are compulsory, that is tags and attribute. Tag means what? Tag means the entity which is defined within the angular bracket. So when we use editor, here can you see मैंने just यहाँ पे left angular bracket define किया है, तो different suggestions display हो गया है. So आपको जो चाहिए that data you can select. Now here first I am using HTML and just मैंने press किया है HTML. Okay, can you see ये सारा डेटा मैंने राइट किया है क्या? नो, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है. यस, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ योर एडिटर. बट यही अगर आपने नोटपैड में किया तो ये सजेशंस आपको नहीं आए. ओके, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट इज
type HTML. Remember one thing, each and every HTML page starts with this doc type HTML tag. What is the use of this doc type HTML? Means it is used to represent your data. Means when we execute our file, आपका file browser पे execute होगा, तो ब्राउजर को ये रिप्रेजेंट करेगा डेटा की जो भी डॉक्यूमेंट आपने यूज किया है वो कौन से टाइप का है, HTML टाइप का है. This doc type HTML is not mandatory, but when we generate this structure, ये यहाँ पे generate होता है. Next tag is HTML tag. So this HTML tag is root element. Means ये root element है. जो भी बाकी के tags आप use करोगे in your HTML, it should be present within this HTML tag. Clear? Then this entire HTML page is divided into the two parts. Very first one is header section and second one is body section. In this head section ये भी डेटा ऑटोमेटिकली ही डिफाइन होता है. मेटा char set UTF-8, then meta name, view code, content equals to width equals to device hyphen width and initial scale 1. So this data we required for bootstrap. Again bootstrap ये एक टेक्नोलॉजी है to design your front end. राइट नाउ हमें इसकी जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने वो रिमूव किया. सो कैन यू सी दिस एंटायर HTML फाइल इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. वेरी फर्स्ट वन इज हेड एंड सेकंड वन इज बॉडी सेक्शन. कैन यू सी इन दिस हेड सेक्शन टाइटल टैग इज प्रेजेंट. सो एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट, अगर आपको आपके वेब पेज के लिए कुछ title specify करना है, then we can use this title tag. So title tag is used to define title to your web page. Okay? It is totally dependent on you. अगर आपको देना है तो दे सकते हो, otherwise you can remove this tag. But अगर आपने title नहीं दिया तो क्या title represent होगा? So जो name आपने आपके फाइल का मेंशन किया है, that name will be displayed as a title to your web page. Okay? Then और कौन से tags present होते हैं in this head tag? So this head section consists title tag, then link tag and style tag also. What is style tag? So if you want to provide CSS, मीन्स अगर आपको और डिजाइनिंग और रिप्रेजेंटेशन डिफाइन करना है इन योर HTML पेज, देन स्टाइल टैग इट इज यूज्ड फॉर CSS. ओके, देन लिंक टैग इज यूज्ड टू लिंक द एक्सटर्नल फाइल इनटू द HTML फाइल. So that style tag and link tag we will discuss in CSS session. So clear this head section. Yes, all of you. Please give reply in chat box. Okay. 2 students are saying yes. Okay. सारे students ने yes reply दिया. Now, second section is body section of your HTML page. So body section. Can you see this is tag and this body tag is called as container. Why it is called as container? Because it contains everything in it. Means जो भी डेटा आपको आपके वेब पेज पे डिस्प्ले करना है, that each and everything you have to define with body tag. So it contains everything in it, na? That's why it is said to be container. Okay? जो भी डेटा आपको रिप्रेजेंट करना है,
You have to define that data within the body tag. So ये contain करता है each and everything in it. That's why it is said to be container. Then body tag close and HTML tag close. Remember one thing, in HTML different tags are used. So जो भी tag use किया है उसको close करना mandatory है. But HTML में सारे tags को close means end tag नहीं होता है. There are some tags जिनको end tag closing tag नहीं है. For example, ing tag, br tag, hr tag. These tags does not have end tag. बट जो बाकी के टैग्स है वो आपको यूज करने के बाद क्लोज करने पड़ेंगे. बट हाउ टू ओपन द टैग एंड हाउ टू क्लोज द टैग. सो टैग ओपन करने के लिए कुछ एंटिटी डिफाइन नहीं करना है. जस्ट लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट, नेम ऑफ योर टैग एंड राइट एंगुलर ब्रैकेट. फॉर क्लोजिंग अगेन लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट, देन स्लैश, name of your tag and right angular bracket. Clear? So here this is opening a tag and this one is closing tag. Again it is opening tag and it is closing tag. Same, ये opening tag है and ये closing tag. Again body tag, it is opening tag and it is closing tag. Clear the structure? So each and every HTML का फाइल जब आप डिजाइन करोगे, first we need this structure of your HTML page. Then only you can design your web pages. So each and every language का एक structure होता है, that is nothing but syntax. And you have to follow that syntax to construct your programs. So this is the structure of your web page, of your HTML page. Okay. So see exactly same thing. HTML structure. So your HTML is comprised with elements and tags. So it begins with HTML and ends with closing tag दिया है HTML. Elements means tags are nested one inside the another. Can you see? Inside this HTML tag, there are different tags are present. Head tag, title tag and body tag. So nesting of tags are allowed in this HTML. Then suppose here one example. See यहाँ पे first as I told you opening a tag. So this is opening tag and to close your tag you have to use slash and then your tag name. We'll see one demo for this HTML. So first I want to print hello world message on my browser. So as I told you, whatever data you want to display on your web page, that thing you have to define within the body tag. So मुझे display करना है one message, that is hello world message. So here मैंने दिया है hello world message. Okay. How to execute this HTML file? So for execution of this HTML file, right click and click on open in browser. Can you see this hello world message is printed on your screen? Yes, all of you? Clear this? So this hello world message जो मैंने पास किया है in this body tag, वो डिस्प्ले हो गया है आपके ब्राउजर पे. तो यहाँ पे जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है आपके सिस्टम का, उस ब्राउजर पे ये आउटपुट डिस्प्ले होता है. Can you see? This hello world message is printed on my browser. Okay. Now this is title bar. Can you see?
यहाँ पे first dot html बिकॉज मैंने मेरा फाइल यहाँ पे first dot html ऐसा सेव किया है. So if we don't define any title, then आपका जो फाइल नेम है that will be displayed as a title of your web page. But I want to define different title to my web page. So you can define with the help of this title tag. So we'll define my first web page. Okay. Again, for execution, directly यहाँ से open in browser किया तो again new tab open होगा. But अगर same file में changes किए हैं तो just you have to refresh this file. Okay, so just refresh it. Can you see in this title bar? Now instead of first dot html, जो title आपने दिया है वो title हो गया है display. Cleared all of you? So this is just first example of HTML. In this way, you can design your web pages. Cleared all of you? Yes. Okay. Kunal is saying yes. Radhika is saying yes. Nisha. Okay. Okay. So ये जब भी आप आपके वेब पेजेस डिजाइन करोगे, first you have to follow this structure. Now, with the help of this HTML, आप वेब पेजेस पे different paragraphs define कर सकते हो, different headings we can define, different images I can load, different audio files, video files we can load. Okay, so we'll see one by one. As well as with the help of this HTML, you can design different forms also. तो फॉर्म डिजाइन करने के लिए फॉर्म पे क्या क्या डेटा होता है? लेबल्स विल बी देयर, टेक्स्ट फील्ड्स विल बी देयर, बटन्स होते हैं, देन चेक बॉक्सेस रहेंगे, रेडियो बटन होता है, लिस्ट रहेगा, ओके, टेक्स्ट एरिया रहेगा. सो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स भी आप आपके वेब पेज पे डिफाइन कर सकते हो. बट फॉर दैट वी नीड form tag. So in this HTML, there are basic formatting tags as well as advanced formatting tags are also there. Basic formatting tags for basic formatting like paragraph के लिए, headings के लिए, ओके, लाइन अगर आपको ब्रेक करना है तो ये जो बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स है, लाइक अगर आपको आपका टेक्स्ट इटैलिक करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, मीन्स बोल्ड करना है, सेंटर में चाहिए, देन मैथमेटिकल और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, वो फॉर्मूलाज डिफाइन करने के लिए वी कैन यूज सम टैग्स. मीन्स वो क्या है? बेसिक फॉर्मेटिंग. बट एडवांस्ड फॉर्मेटिंग टैग्स मीन्स font tag is there. See, when we display one data on our web page, by default is font का size same ही होता है, color of your text same रहेगा, and then family जो use हो रहा है, font family, वो भी same ही होता है. But I want to represent my text in different color. मुझे डिफरेंट फैमिली असाइन करना है, मुझे डिफरेंट साइज देना है. सो इन दैट सिचुएशन आई कैन गो विथ एडवांस्ड फॉर्मेटिंग टैग, दैट इज फॉन्ट टैग. देन लिंकिंग भी रहेगा. फॉर लिंकिंग हाइपरलिंक्स मींस एंकर टैग इज यूज्ड. देन जो स्क्रोलिंग होता है ना टेक्स्ट, तो उसके लिए मार्क्यू टैग इज यूज्ड. देन पिक्चर एलिमेंट इज देयर. अगेन table element is there, means if you want to display table on your web page, then again we can represent a table with the help of different tags and with the help of different attributes. Same for form tag, same for HTML multimedia. So with the help of HTML multimedia, you can upload audio as well as video files. Okay, so these all things we can define with the help of HTML.
एंड अगर ये सारा डेटा आपने डिफाइन किया है तो यू कैन डिजाइन complete website. Okay. So for web pages, for web applications, we use this front-end technology that is HTML. Cleared here? Yes, all of you? Okay. So just we have discussed this first application जहाँ पे हमने just print किया है data on our web page. Now we'll see basic formatting tags from HTML. Okay. So first I will show you slides. So this is HTML body. Okay. Then basic formatting tags. Very first one is paragraph. जब भी आप आपके वेब पेजेस विजिट करते हो तो वहां पे डिफरेंट पैराग्राफ्स प्रेजेंट होते हैं. यस. सो अगर आपको भी आपके वेब पेज पे पैराग्राफ डिफाइन करना है देन फॉर दैट वन टैग इज यूज्ड एंड नेम ऑफ दैट टैग इज p tag. So this p tag is used to create paragraph on web page. So let's create one file. Okay. So we'll create separate file. We'll save our file. Suppose basic formatting tags.html. Okay. As I told you, first always you have to save your file with .html or with .html extension. So here first you have to generate the structure of your web page. जो data अब लगने वाला नहीं है, you have to remove that data. Then title. I want to display title to my web page. So here I am using basic formatting tags. Okay. Now I want to display paragraph on my web page. तो कहाँ पे define करोगे आप paragraph tag within the body tag? Why? Because body tag, it is a container. And as I told you, whatever data you want to display on your web page, that thing must be defined within the body tag. So I want paragraph. So here you have to use p tag. And then you can provide one paragraph. Here I will provide one statement, that is, this is my first paragraph. Okay. So ये just एक paragraph, ये just एक statement मैंने specify किया है within the p tag. And now we'll check output. Right click and then open in browser. So can you see यहाँ पे जो भी पैराग्राफ मैंने डिफाइन किया है वो डिस्प्ले हो गया है. But see, this paragraph is always defines in new line. Always यहाँ पे आपका डेटा on new line define होता है. Because paragraph जो है वो क्या है? It is a block level element. Block level elements are always starts on a new line. Okay. So अगर आपको और भी statements add करने हैं, then you can add all statements. That is, this is my first paragraph based on all formatting tags from HTML. Okay. So again मैंने same file में changes किए हैं, तो just you have to refresh this file. Can you see? So ये data display हो गया. Clear all of you? But आपने एक thing observe किया क्या? First application में ये वाला data जो है वो कहाँ पे represent हो गया है? Left hand side को. अगेन यहाँ पे भी इस वेब पेज पे आपका पैराग्राफ कहाँ पे डिस्प्ले हो गया है? सेम लेफ्ट हैंड साइड को. बट आई वांट टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ माय पैराग्राफ. ओके. तो ये पैराग्राफ जो है वो मुझे मिडल में चाहिए, सेंटर में चाहिए और मुझे राइट हैंड साइड में भी चाहिए. ओके. सो फॉर दैट हियर आई विल रिमूव दिस डेटा एंड आई विल शो यू द आउटपुट.
Now, very first time, डेटा ऑलवेज कौन से साइड में रिप्रेजेंट हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को. बट नाउ आई वांट टू रिप्रेजेंट माय पैराग्राफ एट द सेंटर ऑफ माय वेब पेज. तो इसके लिए क्या यूज होगा? इसके लिए तो डिफरेंट, यहाँ पे अब तक हमने टैग यूज नहीं किया है. सो सी, एज आई टोल्ड यू, इन HTML tags and attributes are present. Okay, attribute means what? It gives extra information about the particular element. तो यहाँ पे पैराग्राफ टैग का एट्रीब्यूट कौन सा है? So there is one attribute of this paragraph tag and name of that attribute is align. Okay, and with the help of that align attribute you can change the alignment of your paragraph. So that is align equals to. Remember one thing, attribute always comes with name and value pair. So align, it is a name of an attribute equal to, within a double quotes आपको पास करना है value. So कहाँ पे चाहिए आपको आपका पैराग्राफ, that value you can mention. Suppose मुझे चाहिए right hand side. So align equals to value is right. Now let's check output. Can you see मेरा पैराग्राफ राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो गया है? Yes. Again, मुझे सेंटर में चाहिए. So instead of this right, you can change the value. Yes. And again we'll refresh our file. Yes, all of you clear? So align, it is an attribute, and attribute gives extra information about your element, and attribute is always comes with name and value pair. So paragraph tag का attribute एक ही है and name of that attribute is align attribute. Here all of you. Now we'll see second formatting tag, that is line break tag. If you want to break the line, then BR tag is used. As I told you, HTML में some tags ऐसे हैं which does not have end or closing tag. So to break the line, BR tag is used. So see, यहाँ पे जो डेटा रिप्रेजेंट मैंने किया है, that is this is my first paragraph. Now this first paragraph, ये जो डेटा है, this data I want to display on new line. Means after this is my, after my, I want to break the line. So generally हम कैसे write करते हैं? This is my and I am pressing enter key. तो न्यू लाइन पे यहाँ पे तो मैंने डेटा को राइट किया है. Let's check आउटपुट. हो गया है क्या लाइन ब्रेक? नो. Within the same line डेटा आपका रिप्रेजेंट हो गया है. Okay, so to break the line here we have to use BR tag. I have used this BR tag once, तो एक लाइन ब्रेक होगा. ऐसे आपको जितने नंबर ऑफ टाइम्स देना है उतने नंबर ऑफ टाइम्स आपका लाइन ब्रेक होगा. ओके, लेट्स चेक आउटपुट फॉर दिस BR tag. कैन यू सी दिस इज माय के बाद हो गया है आपका लाइन ब्रेक and then first paragraph. Clear? So can you see for this BR tag मैंने end tag use नहीं किया है because this tag does not have closing tag. Clear? So these are the two basic formatting tags. Next basic formatting tag, that is heading tags. As the name itself suggests, if you want to define headings on your web page, then heading tags are present. But there are 6 different heading tags are present, which are starting from H1 to H6. H1 maximum size रहेगा, H6 minimum size रहेगा. Let's see headings.
Okay. So now again here I am using BR tag because I want to break the line. First heading tag, that is H1. And here I am using one heading, that is suppose profound. Okay. Then we'll check output. Can you see this profound data display हो गया है? Can you see the difference? ये normal text है and this is a heading. तो normal text है and ये heading है. Heading means by default यहाँ पे वो bold आएगा because it is a heading. Okay. Then next one is H2 tag. Same profound, and then here I am closing this H2 tag. Now H1 maximum है, H2 का साइज थोड़ा सा small रहेगा. Okay, clear? Then H3 profound. Again size small है. So जैसे जैसे आप H4, H5, H6 यूज करोगे साइज मिनिमाइज हो. So H4 suppose profound. Okay, so again H4, then H5 profound, and then here we'll use H6. Same heading I'm using, so that's why आपको difference समझ में आएगा. So can you see H1, H2, H3, H4, H5 and H6. So based on your requirement, you can use these heading tags on your web page. Okay. Just a moment. Okay. See, कुणाल ने क्वेश्चन किया है, that is इसी सीक्वेंस में हमें ये हेडिंग टैग्स यूज करने हैं क्या? Yes, कुणाल, it is a good question. See all of you, इसी सीक्वेंस में आपको आपके हेडिंग टैग्स यूज नहीं करने हैं. एक वेब पेज पे मुझे 6 हेडिंग टैग्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 हेडिंग टैग चाहिए, दैट इज सपोज H2 चाहिए एंड H5 चाहिए. So yes, based on your requirement you can use these tags. Okay, sequence does not matter. आपको जस्ट ये डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने वो सीक्वेंस वाइज यूज किया है, बट इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू. Yeah. So based on your requirement, you can use these heading tags. So ये basically heading tags आप कहाँ पे use कर सकते हो? Heading के लिए, okay? Then जो भी आपका index रहेगा वहाँ पे भी आप ये use कर सकते हो based on your requirement. Okay? So these are the basic formatting tags. Now we'll see different basic formatting tags also. For that, we will create new HTML file. So here I will give basic formatting tags 1.html. Okay. So same structure of your HTML page, then title. You can define a title, that is basic formatting tags 1. You can give any title to your web page. Now here we'll see different formatting tags, that is B tag to make your text bold, I tag to make your text italic, U tag to define underline to your text, then DEL tag to make your text deleted, SUP for superscript effect, SUB for subscript effect, and center tag to make your text at center of your web page. So these are the style tags. With the help of these style tags, you can design your web page.
So I want to define my data in bold. So here I will use B tag. Suppose basic formatting tags, or instead of that we'll give different name, that is style tags. Let's check output. Right click and open in browser. Can you see आया है bold, मीन्स सेम हेडिंग के जैसा ही थोड़ा सा वो क्या रहेगा, यहाँ पे बोल्ड आएगा. Then italic. To make your text italic, I tag is used. So I tag open and I tag close. Okay. See this output carefully. Slightly change होगा ये. Yes. This is italic. Now इसके लिए ही मुझे underline apply करना है. So you have to use U tag. So U tag open, U tag close. Can you see underline? Then next formatting tag is DEL. To make your text deleted. So if you want to represent the deleted text on your web page, then this DEL tag is used. Suppose this is removed. Okay. And now when we use this DEL tag, first I will show you output. Can you see? हो गया है आपका text delete. So to make your text deleted, this DEL tag is used. Okay. Then superscript and subscript effect. So now here I want to represent one mathematical expression. Mathematical data मुझे display करना है. That is, I want to display 2 raised to 8 on my web page. So generally कैसे write करोगे 2, then raised to के लिए ये cap symbol and then 8. And now let's check output. आया है क्या 2 to the power 8? उसके सामने ही आया है, बट ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए. ओके, सो इसके लिए will use one tag from HTML and name of that tag is superscript, that is SUP. So to give superscript means to the power to the raise. And now we'll check output. Can you see? आया है 2 to the power 8. Here all of you? Okay. Then for subscript effect, SUB tag is used. Now I want to define one data, that is binary number मुझे represent करना है. तो binary number represent करने के बाद to the base 2 represent करना है. So here we'll use any binary number and to the base मुझे use करना है 2. So for that SUB, that is subscript effect, आया है यहाँ पे आपका data and to the base. Okay. Then next formatting tag is center. Now इस वेब पेज पे जो भी डेटा प्रेजेंट है, बाय डिफॉल्ट सारा डेटा लेफ्ट हैंड साइड तो ही प्रेजेंट है. Before this we have used one attribute, that is align, but वो align attribute paragraph का है. Yes, so we cannot use that align attribute for these elements. So instead of that we have one tag and name of that tag is center tag. So I want to define these details. Okay, कहाँ पे? Center. So सारा data I will define within this center tag. So center tag open and then center tag close. Let's check output. And you see सारा data shift हो गया है from left to center. Okay.
so these are the different style tags. With the help of these style tags, you can apply different styling to your data. Clear? So with the help of these formatting tags, you can design your web applications. और भी बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स है लाइक आर्टिकल टैग, हेडर, footer, okay, then code tag is there, pre tag is there, okay, then em tag is there, strong tag is there, ins tag is there. ऐसे different tags present है in html, as well as there are different advanced formatting tags are also there, like font tag, देन इमेज के लिए img टैग, hyperlinks के लिए anchor tag, then different lists are also present in html, that is unordered list, ordered list and description list. Then marquee tag is there, picture tag is there, table tag, okay, then form tag and different html multimedia, that is audio tag and video tag. So based on your requirement, you can use these different tags and its attributes to design your web page. Okay. Now we'll see one more part from this HTML. That is, जब भी आप आपका वेब पेज क्रिएट कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट आपके वेब पेज का कलर, बैकग्राउंड कलर व्हाइट रिप्रेजेंट हो रहा है. I want to change the background color of my web page. So for that, one attribute is there. Okay, let's see that. I'm creating new file, that is background.html. Then structure of your HTML page, and within this body tag. See, body tag has two different attributes. Very first one is bg color to set the background color to your web page, and one more attribute is there, that is background. Means instead of color, अगर आपको image represent करना है as a background, then you can use second attribute, that is background attribute. So we see first bg color. As I told you, attribute gives extra information. So always you need to define your attribute within the relevant tag. And attribute always comes with name and value tag. So name of your attribute followed by color. Okay. For execution, right click and open in browser. Can you see by default previous pages के लिए white color था, and I have changed the background color of my web page with the help of bg color attribute. Clear all of you? Instead of this, अगर आपको दूसरा color चाहिए, then you can define that color name and आपका color change होगा. Yes. Now, instead of this color, I want one image as a background. So instead of this bg color, one more attribute is there, that is background attribute. And then for that, you have to define your image name जो आपको display करना है. So I have one image, that is daisy.jpeg. So I will define that image daisy.jpeg. And let's check output. Can you see Daisy का image? But in this folder, मेरे folder में Daisy का एक ही image है, but यहाँ पे number of images display हो रहे हैं. Why? Because it covers entire background area. So automatically it repeats your image. Okay. Cleared all of you? So in this way, you can set background color or background image to your web page. So yes, all of you cleared this introduction part. ये तो just basic formatting tags है.
और advanced formatting tags भी है. With the help of that, easily you can design your different web pages. Okay. So yes, all of you, is there any doubt in this session? Yes. Okay, one more important point right now. This desi.jpeg image मेरे फोल्डर में प्रेजेंट है, बट अगर आपको गूगल से एक इमेज यहाँ पे डिस्प्ले करना है, वो भी आप कर सकते हो. फॉर दैट यू हैव टू कॉपी दैट इमेज एड्रेस. ओके, मीन्स इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो इमेज आपके फोल्डर में ही होना चाहिए. डिफरेंट फोल्डर में है तो वो एंटायर पाथ आपको देना पड़ेगा. क्लियर? So this is just introduction for part for HTML, and with the help of this you can easily design your web pages, you can easily design your web application. So it is a front end technology which is used for designing purpose. Okay, so yes, all of you cleared this part. Is there any doubt in this session? Okay, Nisha is saying no. Rohan is saying no. Okay, all students are saying sure, no doubts. Okay, so I hope आपने enjoy किया है ये सारा data, that is how to format your data, then how to change the background color, how to apply background image. Okay, ऐसे बहुत सारे different tags है. With the help of that you can design your web applications. Okay, so yes, all of you will stop here for the day. Yes, now you can leave the meeting. Thank you.